वेलकम बैक। आज डिस्कस करेंगे एटीट्यूड एंड जॉब सेटिस्फेक्शन के हवाले से। हम थोड़ा जानने की कोशिश करेंगे एटीट्यूड्स क्या हैं। डज बिहेवियर ऑलवेज फॉलो फ्रॉम एटीट्यूड? जो हमारा बिहेवियर होता है क्या वो हमेशा ही एटीट्यूड का रिफ्लेक्शन होता है या इसके अंदर कुछ और भी वेरिएबल्स होते हैं जो असरअंदाज होते हैं। और हम मजीद इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि कौन से ऐसे जॉब एटीट्यूड्स होते हैं जो पॉजिटिव होते हैं या नेगेटिव होते हैं। जॉब सेटिस्फेक्शन के हवाले से कुछ जानने की कोशिश करेंगे कि एम्प्लॉइज विद इन द ऑर्गेनाइजेशंस व्हाट आर दोज फैक्टर्स दैट मेक एम्प्लॉइज सेटिस्फाइड विद इन द वर्क एनवायरनमेंट एंड व्हाट आर दोज फैक्टर्स दैट एक्चुअली मेक एम्प्लॉइज डिससेटिस्फाइड एंड इवेंचुअली दे लीव द ऑर्गेनाइजेशंस। और इसके हम असबाब को भी समझने की कोशिश करेंगे। व्हाट आर दोज रीजंस बिहाइंड द सेटिस्फेक्शन और डिससेटिस्फेक्शन ऑफ द एम्प्लॉइज। फिर उसका इम्पैक्ट देखेंगे। ठीक है, जॉब सेटिस्फेक्शन एंड टर्नओवर एंड जॉब सेटिस्फेक्शन एंड डेविएंस आर नॉट इंक्लूडेड, ऑलराइट। और उसकी ओवरऑल जो इम्प्लीकेशंस हैं, ठीक है, वो भी हम जानने की कोशिश करेंगे ऑन द एम्प्लॉइज एटीट्यूड। लेट्स मूव फॉरवर्ड। हम जब डोंकी को देखते हैं, ये एक पिक्चर में अगर आप देख रहे हैं, देयर इज अ डोंकी, ऑलराइट। और इसके पीछे भी एक लॉजिक है कि नॉर्मली एक ह्यूमन टेंडेंसी है हमारे मुआशरे में, अगर देखा जाए कि हमारी एक like a general tendency of a behavior towards donkey क्या होती है। if we ask ourselves, normally वो इतना हम जो है उसको इतना केयर नहीं करते हैं, इतनी रेस्पेक्ट नहीं करते हैं। डोंकी इज आल्सो एनिमल लाइक अदर एनिमल्स, बट एज कंपेयर टू अदर एनिमल्स डोंकी की जो रेस्पेक्ट है इन अवर सोसाइटी इज समहाउ लो। अब वो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, इसको जानने की कोशिश करेंगे व्हाट कुड बी द रीजन बिहाइंड इट, कि इस तरह क्यों हमारा माइंडसेट है, हमारा एटीट्यूड टुवर्ड्स अ डोंकी इज क्वाइट डिफरेंट देन द अदर एनिमल। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? से फॉर इंस्टेंस, व्हाट आर द लाइकली आर पॉसिबल आवर एटीट्यूड्स टुवर्ड्स अ डोंकी। नॉर्मली डोंकी को जो है हम कुछ नहीं समझते हैं, गुड फॉर नथिंग, ही इज जस्ट एन एनिमल एंड वी डू नॉट have that much sympathetic attitude towards a donkey. We consider him as a like a taken for granted situation, all right. He's not a glamorous, all right. Donkey is not a glamorous, just like pets होते हैं, like other like dogs होते हैं, parrots होते हैं, है ना, lions होते हैं, and we have other animal like cats होती हैं जिसकी बड़ी केयर होती है। अगर आप सोसाइटी में देखेंगे तो जो डॉग्स होते हैं और कैट्स होते हैं उनकी बड़ी देखरेख की जाती है, उनको बिस्किट खिलाए जाते हैं, है ना, डॉग बिस्किट्स होते हैं, कैट बिस्किट्स होते हैं, तो उनकी बड़ी देखरेख की जाती है। तो क्वेश्चन अराइजेस, व्हाई नॉट डोंकी? डोंकी के साथ हमारा ट्रीटमेंट डिफरेंट क्यों होता है? अगर हम डॉग और कैट के साथ जो हमारा जो बिहेवियर है वो डिफरेंट है, तो डोंकी के साथ हम बिल्कुल एक प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट हम क्यों करते हैं? दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग टू नो दैट। तो हम इसको थोड़ा सा कोशिश करेंगे जानने की। ठीक है, we also take it as a animal which is taken for granted, all right. Seldom we get a response that the donkey is one of the hard working animal and loyal to its master. ठीक है, अगर आप सोसाइटी में से किसी को रिस्पांस पूछेंगे या किसी से फीडबैक लेंगे तो बहुत ही कम लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो बेसिकली डोंकी की केयर करते हैं, जबकि डोंकी इज मोस्ट लॉयल टू इट्स मास्टर। जो उसके डोंकी के जो ओनर होते हैं, जो चलाते हैं, तो उनके साथ लॉयल भी बहुत होता है और बड़ा हार्ड वर्किंग होता है। बेचारा पूरा दिन काम कर रगड़ा लगता है उसका, पूरा दिन काम लेते हैं उससे, लेकिन उसकी इतनी जो है केयर नहीं की जा सकती। हम जानने की कोशिश करेंगे आखिर ऐसी क्या वजह है कि डोंकी इज नॉट बीइंग गिवन दैट मच काइंड ऑफ अ रिस्पांस फ्रॉम अवर सोसाइटी, ऑलराइट जी। हम अपने एटीट्यूड के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। वी ट्रीट पीपल इन सिचुएशन इन द सेम मैनर एज वी डू विद द डोंकी। और नॉर्मली अगर हम सोसाइटी की बात करें, हमारी सोसाइटी के अंदर जो है नॉर्मली हम ना सिर्फ डोंकी बल्कि हम इंसानों के साथ भी बाज़ औक़ात ऐसा सलूक कर बैठते हैं विद इन अवर सोसाइटी, जो जिस तरीके से लोग जो है वो यूज्ड टू हैं डोंकी के साथ ट्रीटमेंट करने के। मतलब वी हार्डली डिफरेंशिएट बिटवीन द डोंकीज एंड द ह्यूमंस। Sometimes we behave with the humans like normally people behave with the donkeys. तो वो भी एक बड़ा बड़ा फैक्टर है जिसको हम थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे। और उनकी कोई अच्छाई जो है हम कभी भी कंसीडर नहीं करते, चाहे वो ह्यूमंस हों। अगर हम ह्यूमंस की बात करें तो हमेशा जब हमारी सोसाइटी के अंदर हमेशा हम नेगेटिव साइड जो है, डाउन साइड ऑफ द ह्यूमंस है, हम उसी को ज्यादा फोकस करते हैं, उसी के ऊपर ज्यादा गौर करते हैं एज कम्पेयर टू देयर पॉजिटिव साइड। The same case goes with the donkeys.
ठीक है जी, दिस इज द सेम लाइक वी ओनली लुक एट द नेगेटिव साइड and start reacting on the negative side or the downside of the humans or the donkeys. All right, I mean this is a general tendency of behavior or a human behavior in our society. We need to understand that why is it so. एटीट्यूड के बारे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं। एटीट्यूड है क्या? एटीट्यूड इज अ मेंटल पोजीशन रिलेटेड टू अ वे ऑफ थिंकिंग और अ बीइंग। हम अपने दिमाग में किसी के बारे में कोई राय कायम कर लेते हैं अकॉर्डिंगली व्हेन वी हैव सम सॉर्ट ऑफ फीलिंग or we judge people on the basis of their own behaviors and make some positive or negative feeling in our mind, and on the basis of those negative or a positive feeling we tend to react. और जब उसी फीलिंग्स वही फीलिंग्स पॉजिटिव या नेगेटिव जब इन्फ्लुएंस होती हैं हमारे एक्शंस पे, तो इसका मतलब वी एक्चुअली influenced by our feelings, and our action is known as a attitude towards animals, humans, or anything or any object. All right, if you think you can, you are right. If you think you can, you are right. If you think you can't, you are also right again. Yes, it is all a matter of attitude. अगर आप इस स्टेटमेंट को थोड़ा सा देखेंगे, that shows your level of positive and negative attitude. All right, अगर आप अपनी ही जहन में, फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर स्टूडेंट, अगर आप समझते हैं कि मैथमेटिक्स जो है आप अच्छे तरीके से उसको पढ़ सकते हैं, उसको परफॉर्म कर सकते हैं, उसको एग्जाम कर सकते हैं, तो यू विल बी एबल टू अटेम्प्ट मैथमेटिक्स इन अ वेरी वेल मैनर। ऑलराइट, अगर आपने एक माइंडसेट बनाया, आपकी सोच में ये कहीं बैठ गया है कि आप मैथमेटिक्स नहीं पढ़ सकते हो, and it will be very difficult for you to clear or pass your examination, तो नेचुरली आपके लिए वो थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो जब हम ये बात कर रहे होते हैं कि लाइक जब आप किसी चीज के बारे में पॉजिटिव होते हो, यू आर सो मच मोटिवेटेड एंड यू आर thinking that this is a kind of a subject or a thing that you can do, तो फिर आपके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी जनरेट होती है जिसकी वजह से आपका एक एटीट्यूड पॉजिटिव जाता है। जैसे ही वो पॉजिटिव एनर्जी जनरेट होती है तो आपका एटीट्यूड पॉजिटिव हो जाता है और फिर आपके पॉजिटिव एक्शंस शुरू हो जाते हैं टुवर्ड्स दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट और अ थिंग। फिर उससे रिलेटेड जो भी आपको चीज करनी होती है तो आप उसको कर जाते हो, एंड दैट इज मेंटल स्टेट कि आप अगर किसी चीज को नेगेटिव लोगे तो आप कहोगे ये चीज मुश्किल है, ये नहीं हो सकती, तो नेचुरली इट विल बी डिफिकल्ट फॉर यू। बहुत सारे ऐसे चैलेंजिंग टास्क आते हैं एम्प्लॉयमेंट करियर में कि जिसमें आपको बाज़ औक़ात पहले एक्सपीरियंस नहीं होता है, उसकी कोई खास इंफॉर्मेशन नहीं होती है, बिकॉज इन एम्प्लॉयमेंट व्हेन यू डू अ टास्क फॉर द फर्स्ट टाइम इट इज ऑलवेज न्यू फॉर यू। So because of your own cognitive ability, your experiences and your gut feelings also combinedly met together, तो आपका एक positive attitude generate करती है। तो it start from your feeling, how you feel about the things. Whether you feel something good, very positive about the things, it will create a positive attitude and vibes in your mind, ताकि आप accordingly उसका फिर react करते हैं। Alright जी? Then the positive thinker sees the invisible, feels the intangible and achieves the impossibles. Very important statements. Alright, जो positive thinker होते हैं, why positive thinking is so important? Because they see things that normally humans can't see. जो लोग नेगेटिव एटीट्यूड के मालिक होते हैं, जो नेगेटिव थिंकर होते हैं, वो हमेशा हर चीज में प्रॉब्लम ही आइडेंटिफाई करते हैं, whereas जो पॉजिटिव थिंकर हैं वो हर प्रॉब्लम में सॉल्यूशन आइडेंटिफाई कर लेते हैं। दिस इज द डिफरेंस ऑफ अप्रोच एंड द फील एंड द एटीट्यूड अबाउट एनीथिंग। ऑलराइट, क्योंकि अगर आपका एटीट्यूड पॉजिटिव है, यू आर अ पॉजिटिव थिंकर, योर एटीट्यूड विल बी पॉजिटिव टू एवरीथिंग। चाहे वो सब्जेक्ट्स हो, कोई काम हो, कोई भी टास्क हो, अगर आपको असाइन किया जाएगा तो यू विल ऑलवेज बी इन अ पॉजिटिव स्टेट। ट्राई टू understand that task, try to understand and try to find out the solutions. All right, that's why it is written here कि वो आपको जो इनविजिबल चीजें हैं वो भी एक पॉजिटिव थिंकर को उसके अंदर कुछ चीजें नजर आती हैं, जो क्लूज नजर आते हैं, जिसके थ्रू वो उस प्रॉब्लम को या उस सिचुएशन को वो इजीली गो थ्रू कर सकता है, सॉल्व कर सकता है। और कुछ टेंजिबल होती हैं, जो विजिबल होती हैं, यू कैन टच इट और व्हाटएवर द मे बी, बट इफ यू आर अ पॉजिटिव थिंकर तो उसके अंदर आपको जो इंटेंजिबल चीजें हैं, इंटेंजिबल इन टर्म्स ऑफ इन द आईज ऑफ अदर पीपल हु आर अ नेगेटिव थिंकर, ऑलराइट, तो उसमें बहुत सारी चीजें आपके सोर्सेज, आपके क्लूज ऐसे मिल जाते हैं जिससे आप कोई ना कोई वे आउट निकाल लेते हो, एंड इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ यू बीइंग एज अ पॉजिटिव थिंकर। ऑलराइट,
and you always committed with the task. You are committed with your task in a way कि आपको पता है कि ये चीज आपको पढ़नी है, स्टडी करनी है, एग्जाम में क्लियर करना है, and you are positive you will make on it. उसके लिए आप एफर्ट करते हो, एनर्जी लगाते हो, टाइम लगाते हो, रिसोर्सेज लगाते हो टू अचीव इट. अगर आपने इसमें देखा होगा कि जो बहुत सारे जो लोग मुख्तलिफ लाइक चोटियां असर करते हैं, पहाड़ियां असर करते हैं, या स्विमर्स होते हैं, मैराथन में रेस में पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं, ये दे डू वंडर्स because they are all positive thinkers. They do not feel negativity, they do not see any negativity in any challenging task. All right, your choice of attitude can decide the outcome of your life. एक बड़ी कहावत है कि God help those who help themselves. All right, अल्लाह ताला भी उन्हीं की मदद करता है जो अपनी खुद की मदद अपनी मदद आप करते हैं. All right, so that is also a kind of a clue or a guidance about the human beings. If you are a good, positive, energized and positive, you are a positive thinker and you work hard, you are dedicated, committed towards your goal or an objective, naturally there are sources that actually help you to achieve your goal. All right, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अगर आपने देखा होगा कि आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा कि जो बहुत एक लाइक बड़ी पोजीशंस पे जाके वो लाइक उन्होंने अचीव किए हैं, बड़े गोल्स अचीव किए हैं, बड़ी डिस्कवरीज की हैं. तो अगर आप किसी से भी लाइक अगर आप प्रोब करेंगे, इंटरव्यू करेंगे, तो उसमें एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट जो आपको मिलेगा उनके अचीवमेंट के पीछे, दैट इज अ पॉजिटिव एटीट्यूड. बहुत सारे लोग हैं जो लाइक फॉर एग्जांपल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस होते हैं, उसके अंदर वो फर्स्ट पोजीशन होल्डर हो जाते हैं. कुछ लोग हैं डॉक्टर्स हो जाते हैं, पीएचडीज कर रहे होते हैं. दे आर ऑल एक्चुअली अ पॉजिटिव थिंकर, क्योंकि चैलेंजेस वो भी फेस कर रहे होते हैं, लेकिन वो हमेशा इस चीज को पॉजिटिव लेते हैं, बिकॉज पॉजिटिविटी उनके अंदर होती है, उनकी अप्रोच में होती है, और उसी चीज को वो चैलेंज समझ के with a positive approach and attitude they always strive for to achieve that particular goal. और अगेन जैसे ही वो स्ट्रगल करने के बाद जब वो चीज को अचीव कर लेते हैं, तो एक सक्सेस जिसको कहते हैं, या एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन, स्टेट ऑफ सेल्फ सेटिस्फेक्शन उनको नसीब होती है, और वो अपनी लाइफ से बड़े सेटिस्फाइड या कंटेंट महसूस होते हैं, क्योंकि हमेशा उनकी जो अप्रोच रही वो बड़ी पॉजिटिव रही है. हमेशा चीजों में उन्होंने पॉजिटिविटी ही देखी है. नेगेटिव थॉट्स हैव नो पावर अनलेस यू एम्पावर देम. इंसान कभी भी जब इसका एक बड़ा एग्जांपल है, आप जब किसी के साथ फाइट करते हैं, व्हेन यू आर इन अ बैटल इन द ग्राउंड, ऑलराइट, आप तब तक नहीं हारते हो जब तक आप इस चीज को मान नहीं लेते हो कि आप हार चुके हो. ऑलराइट, कोई भी फाइटर तब तक हारता नहीं जब तक वो उस चीज को मान ना ले. तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, दैट शोज योर अप्रोच एंड एटीट्यूड. ठीक है, बहुत सारे अगर आपने रेसलिंग देखी है, रेसलिंग के अंदर दो फाइटर्स आपस में लड़ रहे होते हैं, ठीक है, वो आखिरी दम तक लड़ रहे होते हैं जब तक वो पूरे लाइक फेंट ना हो जाए या गिर ना जाए. दे यूज टू फाइट टिल देयर लास्ट ड्रॉप ऑफ एनर्जी. ऑलराइट, वो तब तक नहीं हारते हैं जब तक वो मान नहीं लेते हैं. अगर आपने रेसलिंग में देखा होगा, कोई भी रेसलर तभी जीत रहा होता है जब सामने वाला उस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर लेता, अदरवाइज द फाइट गोज ऑन, चाहे वो आधा घंटा हो. और देर आर एग्जाम्पल, अगर आप भी किसी दिन सर्च कर लेंगे तो देर आर फाइट्स जिसके अंदर बाजों का टाइज हो जाती है, मतलब कोई भी हार मानने के लिए तैयार नहीं हो जाता. ठीक है, देन जो टाई सिचुएशन होती है, तो देयर इज अ विन विन सिचुएशन फॉर ऑल, नोबडी इज डिफीटेड. तो लिहाजा आप डिफीटेड तभी कहलाएंगे जब आप डिफीट को मानेंगे. जब तक आप फाइट करेंगे, यू आर फाइटिंग इन द रिंग, यू आर नॉट डिफीटेड. तो दिस इज द डिफरेंस ऑफ द अप्रोच. ऑलराइट, इसी तरीके से नेगेटिव थॉट्स आपके ऊपर तब तक असरअंदाज नहीं होते हैं जब तक आप उनको एम्पावर नहीं करते या उनको आपके ऊपर इन्फ्लुएंस करने आप देते नहीं हैं. जैसे ही कोई नेगेटिव थॉट आता है, यू कैन रिमूव इट बाय कंपनसेटिंग और बाय एडजस्टिंग विद द पॉजिटिव थॉट्स. ऑलराइट, व्हाट इज द एटीट्यूड, इसको थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव अंदाज में हम समझने की कोशिश करते हैं. इवैल्यूएटिव स्टेटमेंट्स आर जजमेंट कंसर्निंग अबाउट ऑब्जेक्ट्स, पीपल्स और इवेंट्स. ऑलराइट, किसी के बारे में भी जब आप कोई राय कायम कर रहे होते हैं, या किसी ऑब्जेक्ट के बारे में, किसी चीज के बारे में, ऑन द बेसिस ऑफ इट्स डिफरेंट लाइक बिहेवियर्स, में भी आप उसकी परसेप्शन आपकी हो, लेकिन आपकी जो परसेप्शन होती है बेस्ड ऑन हिज ओन बिहेवियर हो सकती है, उसकी कम्युनिकेशन स्टाइल हो सकती है, या उसका कंडक्ट हो सकता है, उसका बैकग्राउंड हो सकता है, उसका एक्सपीरियंस होता है,
उसके बेसिस पे आप कोई उसके बारे में एक परसेप्शन बनाते हो, और ऑन द बेसिस ऑफ दैट परसेप्शन एक्चुअली you basically judge other person and develop your attitude towards that particular person or a thing or an object. All right, attitude बनता किस तरह है? There are three components. All right, पहले तो आपको फील करना होता है when there is a cognition. All right, cognition means realizing anything. cognition आपके दिमाग में उसके बारे में कोई सोच कायम होती है या सोच आती है, पॉजिटिव और नेगेटिव। पहले तो वो चीज आप कॉग्निटिवली उसको रियलाइज करते हो, हाँ ये चीज है, you know keep that particular feeling or a behavior in your mind. All right, and then comes affective क्या है? emotional or a feeling segment of an attitude. All right, when something comes in your memory and your mind about someone or something or some person, फिर आप उसके बारे में एक फील डेवलप कर लेते हो, पॉजिटिव या नेगेटिव, सिंपैथेटिक और like aggressive, whatever the feel that you have in your mind about that particular person or objective is known as an affective segment of your attitude. All right, and the third is a behavior, means when cognitive interact with the affective segment of your attitude, and attitude is an outcome of all three segments. जैसे ही आप किसी के बारे में like opinion और कोई belief develop कर लेते हो, फिर उसके बारे में आप एक राय कायम कर लेते हो या फील करना शुरू कर देते हो, positive or negative, then it is translated into the action that is known as a behavior. All right, कि आप किसी के बारे में कोई इंटेंशन रखते हो। अब एक्शन से मुराद ये भी हो सकता है कि वो लाइक फिजिकल एक्शन भी हो सकता है, वो साइलेंट एक्शन भी हो सकता है। ऑलराइट, किसी के बारे में आपने एक फर्म ओपिनियन डेवलप कर लिया, वो भी आपका एक्शन है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी के साथ लाइक इफ यू डू नॉट फील समवन गुड पर्सन, अगर आप समझ रहे हो कोई बंदा जो है, से फॉर इंस्टेंस ही इज एडिक्टेड, ड्रग एडिक्टेड, तो नॉर्मली हमारी सोसाइटी में उसके अगेंस्ट में जो बिहेवियर होता है वो बड़ा नेगेटिव हो जाता है। ठीक है, और इसके अलावा अगर कोई फॉर एग्जाम्पल ही इज अ क्रिमिनल, तो आपके लिए नेगेटिव होगा। अगर कोई ऐसा है जिसके ऊपर जुल्म हो रहा है, कोई ऐसा है जिसका कोई राइट या हक जो है सल्ब किया जा रहा है, ही इज अ विक्टिम ऑफ एनी एग्रेशंस, तो आपका एक जो बिहेवियर है उसके अगेंस्ट आपका बड़ा सिंपैथेटिक हो जाता है। तो दिस इज अ काइंड ऑफ एन एटीट्यूड दैट यू डेवलप अगेंस्ट एनी पर्सन, ऑब्जेक्ट और अ थिंग। ऑलराइट, and this attitude is attitude is the outcome of three segments, that is cognition or known as a cognitive, then affective means a feel segment of your mindset, and then behavior is a translation or a reaction or a action of your cognitive and affective segment of your attitude. All right ji, it is translated into the attitude that is an action may be आप उससे फिर सिंपैथी रखोगे या आप उससे नफरत करोगे, आप मोहब्बत करोगे। दिस इज ऑल अबाउट द एटीट्यूड। ऑलराइट जी, इसको मजीद थोड़ा सा एलोबरेट कर लेते हैं। कंपोनेंट्स ऑफ एटीट्यूड, इसको ग्राफिकली हमने थोड़ा सा एलोबरेट करने की कोशिश की है कि नेगेटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स सुपरवाइज किस तरह बनता है या पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स सुपरवाइजर किस तरह बनता है। पहले तो आपकी कॉग्निटिव स्टेज जो है, जिसके अंदर आप इवेल्युएट करते हो। माय सुपरवाइजर, से फॉर इंस्टेंस, माय सुपरवाइजर गिव अ प्रमोशन टू अ कोवर्कर हु डिजर्व इट लेस देन मी, माय सुपरवाइजर इज अनफेयर। अगर आप किसी इदारे में काम कर रहे होते हो, देयर आर अ कोलीग अलोंग विद यू, आपका एक डिपार्टमेंट, उसी डिपार्टमेंट के अंदर जो है मुख्तलिफ कोलीग्स काम कर रहे होते हैं, जिसकी लेवल ऑफ एक्सपीरियंस, नॉलेज, स्किल्स एंड एबिलिटीज आप समझते हैं कि वो आपके बराबर है। और जब आपका सुपरवाइजर उसको रेट करता है, उसकी परफॉर्मेंस एवोल्यूशन को, तो आपकी परफॉर्मेंस एवोल्यूशन में जो रेटिंग है वो कम आती है। नेचुरली उस रेटिंग कम आने की वजह से जो पर्क्स एंड प्रिविलेजेस आपको मिलने थे या आपको मिलने चाहिए थे या आपको भी मिलने चाहिए थे, वो आपको नहीं मिले, वो सिर्फ आपके किसी कुलीग को मिले। एंड यू डेवलप एन काइंड ऑफ अ फीलिंग कि यार आपके जो सुपरवाइजर ने फेयरली आपको रेट नहीं किया, आपकी परफॉर्मेंस को एवेल्युएट नहीं किया। You develop a negative feeling about your supervisor. आपने evaluate किया कि हाँ उसने कुछ unfair किया है या उसने कुछ fair किया है, मुझे अच्छी तरीके से ट्रीटमेंट दिया, whatever the case may be। अगर आपकी evaluation ये है, आप अपने सुपरवाइजर के बारे में ये समझते हैं कि उसने आपके साथ unfair ट्रीटमेंट किया in terms of evaluation, in terms of dealing, कभी बाज़ औक़ात वो insultive attitude भी होता है, and you feel insulted or ignored or discriminated because on any of these ground you feel कि your supervisor is not fair enough with you, तो you develop a kind of a feeling against him, जो इसमें आपको लगता है कि हाँ actually मेरा जो है supervisor सही नहीं है, and that is why I hate him or I dislike him, I do not like his approach, I do not like his the way of communication, कि वो insulting attitude है। I do not
consider him a fair evaluator or a kind of a person who actually make a justice. अगर आपको feeling है कि supervisor आपके साथ justice नहीं कर रहा है because of that particular evaluation, then you develop a behavior. all right, you become in a stage of action जहां पे आप feel करते हैं. अब actions किस तरह के हो सकते हैं? एक तो डेमोन्स्ट्रेशन हो सकती है कि आप एहतजाज करें, कंप्लेन करें. दिस इज अ काइंड ऑफ अ डेमोन्स्ट्रेटेड, या जिसको आप शो कह सकते हैं कि आप एक्शन को रिफ्लेक्ट करते हैं. रिफ्लेक्ट, वी कॉल इट रिफ्लेक्सिव एक्शन. ऑलराइट, रिफ्लेक्सिव एक्शन क्या है कि आप उनको दिखाते हैं कि आप जो है सुपरवाइजर को पसंद नहीं करते हैं. अब वो रिफ्लेक्सिव बहुत सारे तरीकों से हो सकता है कि आप एहतजाज करें, उसकी कंप्लेन कर लें, या उसके साथ इंसल्टिव एटीट्यूड रिटायरेट करें, रेजिस्ट करें, उनकी कहना नहीं माने. दिस इज समथिंग you disable with your supervisor instruction and all that. This is something reflexive action. all right, जिससे आप रिफ्लेक्ट करते हो, दिखाते हो, बताते हो. लेकिन कुछ ऐसे एक्शंस होते हैं जो रिफ्लेक्सिव नहीं होते हैं, साइलेंट होते हैं. तो उसमें आप फील करते हो कि हाँ यार ये बुरा है, लेकिन आप उसके खिलाफ कोई ऐसा डिटर्मिनेंटल कोई एक्शन नहीं लेते हो, कोई कंप्लेन नहीं करते हो, आपने कोई बदतमीजी नहीं की, लेकिन यू कीप ऑन बियरिंग दैट पर्टिकुलर एटीट्यूड टूवर्ड्स यू. तो ये मुख्तलिफ तरीके के दो आपके एक्शंस हो सकते हैं. लिहाजा सपोजिटली इफ यू आर फीलिंग एंड इफ यू हैव डेवलप्ड अ नेगेटिव बिहेवियर टूवर्ड्स सुपरवाइजर, तो नेचुरली जो है आपका एटीट्यूड टूवर्ड्स योर सुपरवाइजर विल बी अ नेगेटिव. ऑलराइट, because you have evaluated and felt negatively about your supervisor. अगर यही चीजें पॉजिटिव जाएंगी तो you will develop a positive attitude towards supervisor. alright, जिस तरह लियोन फेसिंगर ने एक स्टेटमेंट की, अभी मैंने एक्सप्लेन भी किया कि जरूरी नहीं है कि आपका हर सिचुएशन में जो है एक्शन जो है वो रिफ्लेक्सिव हो, वो कभी साइलेंट भी होता है. उसको हम कॉग्निटिव डिसोनेंस के नाम से जानते हैं. एनी इनकम्पेटिबिलिटी बिटवीन टू और मोर एटीट्यूड और बिटवीन बिहेवियर एंड एटीट्यूड. ये कॉग्निटिव डिसोनेंस क्या होता है? कॉग्निटिव डिसोनेंस ये होता है कि अगर आपको कोई ऐसी इनकम्पेटिबिलिटी है, लाइक फॉर एग्जांपल अगर आपने लाइक किसी के बारे में एक नेगेटिव जो है कॉग्निटिव फीलिंग या इवैल्यूएशन नेगेटिव है, और आप फील करें वो ही इज नेगेटिव बट यू डू नॉट डू एनी रिफ्लेक्सिव एक्शन अगेंस्ट हिम, तो वो कॉग्निटिव डिसोनेंस कहलाता है, जिसका मकसद ये है कि आप समझते हैं कि कुछ एटीट्यूड आपके अगेंस्ट में है या आपके खिलाफ है, उसका एटीट्यूड जो है आपके लिए पॉजिटिव नहीं है, बट स्टिल यू कीप ऑन साइलेंट, कीप ऑन साइलेंट, कि आप कोई बात नहीं करते हो, रिफ्लेक्सिव नहीं है, तो वो कॉग्निटिव डिसोनेंस कहलाता है. मींस वो क्यों होता है उसको थोड़ा सा देख लेते हैं. इंडिविजुअल सीक्स टू रिड्यूस हिज uncomfortable leg gap or dissonance to reach stability and consistency. एम्प्लॉयमेंट की अगर जहां तक बात करूं, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस में इंडस्ट्री के अंदर इस तरह की चीजें कॉमन होती हैं. आई मीन अगर आप इंडस्ट्री या किसी भी फर्म में काम कर रहे हैं तो वहां के जो एम्प्लॉयज हैं, ये नहीं मुमकिन कि वहां के 100% एम्प्लॉयज जो हैं सेटिस्फाइड हों विद द ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसी. और अगर मैं डिपार्टमेंट की बात करूं, इट इज नॉट पॉसिबल के किसी एक सुपरवाइजर से जो है उसका जो तमाम तर जो सबऑर्डिनेट स्टाफ है वो 100% मुतमईन हो. इट इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल और इट इज नॉट कॉमनली ऑब्जर्व इन द ऑर्गेनाइजेशंस, बिकॉज कहीं ना कहीं जो है जो आपके सबऑर्डिनेट स्टाफ है वो थोड़ा सा आपके लिए डिससेटिस्फाइड होते हैं. उसमें एक हो सकता है, दो हो सकते हैं, या एक से ज्यादा या दो से ज्यादा भी हो सकते हैं. बिकॉज जो ऑर्गेनाइजेशनल सुपरवाइजर हैं दे आर बाउंड बाय सम लिमिट्स. ऑलराइट, चाहे वो रिम्यूनरेशन हो, पे एंड पर्क्स हो, या बहुत सारी और चीजें. इनफैक्ट दे आर आल्सो ह्यूमन, दे कैन नॉट बी लाइक अ रोबोटिक स्टाइल, दे कैन नॉट बिहेव इन अ सिस्टमैटिक एंड इन अ सेम मैनर ओवर एंड ओवर अगेन. सो सम टाइम इट हैपेंस, कभी उनसे स्लिप ऑफ टंग हो जाएगी, कभी कंडक्ट में उनके साथ प्रॉब्लम हो जाएगी. इट ऑलवेज हैपन. तो लिहाजा एज पर रिसर्च एंड एज पर ऑब्जर्वेशन देयर इज अ हाईली लाइकली कि वहां के जो सबऑर्डिनेट होंगे अपने सुपरवाइजर से एक या एक से ज्यादा भी डिससेटिस्फाइड हो सकते हैं. तो उस सूरत में जब वो डिससेटिस्फाइड होते हैं और उसके खिलाफ कोई सुपरवाइजर के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेते हैं, तो लिहाजा क्योंकि उनका एटीट्यूड तो नेगेटिव है बट दिस इज देयर बिहेवियर इज नॉट रिफ्लेक्सिव और उनका एक्शन इज नॉट रिफ्लेक्सिव, देन दिस इज नोन एज अ डिसोनेंस. ऑलराइट, इट इज नोन एज अ कॉग्निटिव डिसोनेंस, कि वो समझते हैं कि वो उनका सुपरवाइजर उनके साथ अनफेयर है, ही इज नॉट फेयर विद देम, बट स्टिल दे आर साइलेंट, दे डू नॉट रिफ्लेक्ट, क्योंकि वो उस सिचुएशन से गो थ्रू करना चाह रहे हैं, किसी तरीके से बर्दाश्त करके, टॉलरेट करके, उससे उस सिचुएशन और उस मोमेंट से वो गुजरना चाहते हैं.
Consistency is achieved by changing the attitude, modifying the behaviors or through rationalization. क्योंकि हर एम्प्लॉय सबॉर्डिनेट स्टाफ ये हमेशा कोशिश करता है कि उसका बॉस जो है उसके साथ उसकी बनी रहे, उसके साथ उसकी अंडरस्टैंडिंग हो, क्योंकि इट्स ऑफ कोर्स अ रिलेशनशिप बिटवीन द सुपरवाइजर एंड द सबॉर्डिनेट स्टाफ, ऑलराइट। जितना रिलेशनशिप अच्छा होगा तो उतना ही पॉजिटिवली जो है एक टीम की तरह वो काम कर सकेंगे। और लिहाजा क्योंकि बॉस और सुपरवाइजर जो है वो दे आर लिटिल बिट मोर अथॉरिटेटिव एज कंपेयर टू द सबऑर्डिनेट स्टाफ, तो लिहाजा उसमें कोशिश ये होती है सबऑर्डिनेट स्टाफ की कि किसी तरीके से हमारी कंफर्ट लेवल जो है वो समाओ वन और अदर वे वो मेंटेन रहे विद देयर सुपरवाइजर्स, ताकि कभी भी उनको लाइक जॉब इवोल्यूशन या जॉब परफॉर्मेंस इवोल्यूशन के दौरान या उनकी जो डेली रूटीन के जो वर्क एक्टिविटीज है उसमें उनको कभी प्रॉब्लम नहीं आए। दे वांट टू हैव सम पॉजिटिव एटीट्यूड ऑफ देयर सुपरवाइजर विद देम। फिर उसके लिए वो कभी कभी बर्दाश्त कर लेते हैं, टॉलरेट कर लेते हैं और इस चीज को खामोशी से कैरी ऑन करते हैं कि कोई प्रॉब्लम मजीद एग्रीवेट ना हो जाए। अच्छा, ये जो डिजायर होती है, डिजायर टू रिड्यूस डिसोनेंस डिपेंड्स अपॉन व्हाट फैक्टर्स, लाइक फॉर एग्जांपल से इंपॉर्टेंस ऑफ द एलिमेंट्स। I mean, if there is a situation where you need to, I mean, employees, you never know कि जो employees हैं वो किस तरह कौन सी situation में होते हैं। Sometimes situation demands, despite of all the fairness and negative attitude of your supervisor towards you, but you still keep on going, working with that particular supervisor because there could be many reasons behind it, because your family background, your financial status, your emotional stability, your future, your career growth, all right, and your child education, and all are these factors that actually make you motivated to keep on continue with your existing supervisors despite of all these unfairness and biased treatment with you. So that depends upon the importance of the element. I mean, if you are if you have something that is more important than the bearing the negative attitude of your supervisor, you will definitely go with it and you will try to accommodate yourself in a given situation. And then degree of individual influence. If you have some sort of a relationship or a networking within that organization, if you have some good rapport with the other senior supervisors as supervisors, that can be helpful to you. अगर आपके supervisor ऐसा है जो आपके साथ negative है, but you have a good networking and rapport within the organization, your voice is being heard by the management or the senior supervisors, then you are in a good position to amend the situation while taking other people on a board to get some sort of a favors from them or a support from them to request your supervisor to mold his or her attitude towards you. So this is again depending upon your level of influence within that department or organization. अगर आपका level of influence ज़्यादा होगा तो you are most likely to have a good response or a comfortable level to amend the current situation with your supervisors. Rewards involved in dissonance, all right? I mean, say for instance, there are many supervisors who actually very assertive employees. I mean, the subordinates who used to obey their instructions, follow their commands, and do what they are asked for by the supervisor. And this is a general tendency of a supervisor. We call it a supervisor mentality in our society. In our society, most of the supervisors are their boss minds. They used to love to deliver the commands, ask subordinates to do this and do that, and they always prefer those employees or subordinate staff who are actually following their instructions with letter and spirit. All right, the people or employees or subordinate staff who actually try to counter the instructions of the supervisor or try to highlight things that could be a negatively that could have a negative impact on the departmental functions or organizational goodwill or overall revenue or sales. So इस तरह के supervisor जो हैं वो कोशिश करते हैं कि उस तरह के subordinate staff को थोड़ा सा they always try to keep them in a situation ताकि वो किसी तरीके से mold हो जाए और उनके कहीं भी बात को मानना शुरू कर दे. So this is generally a tendency of the society. तो इस तरह की चीजें होती हैं हमारे society के अंदर. Alright जी, job attitude.
जॉब एटीट्यूड क्या कहलाता है? लेट मी बी क्लियर अबाउट दिस कि जॉब एटीट्यूड होता क्या है? एनीथिंग, एनी एटीट्यूड, द वे यू एक्चुअली take on your job, whether positively or negatively, is known as a job attitude. All right, when you feel something good about your job is a positive job attitude, and if you feel something negative about your job is a negative job attitude. And we need to know, okay, what are the factors that actually, what are those variables or factors that can affect on your job attitude. All right, if you are satisfied with your job, if your job is you are satisfied with your job, and this is something very challenging, addresses your interest, you love your job, then of course your job satisfaction will be higher and your behavior will be positive. In other case, if you are not satisfied with your job because it is maybe the something that you don't interest in it, and it is something that is very impractical and very difficult, very complex, and this is something that is against your beliefs. Many of the people, actually many of the employees, do not do the bank's job because they are not satisfied with that particular job. They leave the job because in our society, mostly employees believe that the interest, bank jobs drives interest, and interest being which is a taboo in the Islam. So that's why, that is the reason, the most of the many of the employees in working in the banks are really much dissatisfied with their current job because they do not like it. Now they don't quit because of many reasons, because they might don't have any other options like that. I mean, there is a multiple factor that can offend. It may be the salary, it may be the nature of work, it may be the situation. I mean, health and safety environment. All right, maybe hygienic conditions, maybe supervisor attitude, maybe your colleagues. These are the different work factors that can be the sources of your job satisfaction or dissatisfaction. All right, now job involvement. All right, what is this? This is a degree of a psychological identification with a job where perceived performance important to self-worth. What you do is more important for you than anybody else. Whatever you do, if you feel that you are doing something valuable, something important that has a significant impact on the society or your department or organizational functions, so you are likely to have a great degree of a job involvement. ठीक है, अगर आपको इस तरह का कोई काम है जिसमें आपको लग रहा है कि आपके काम की सिग्निफिकेंस नहीं है, उसकी इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है, इसकी इतनी वर्थ नहीं है, या उसका इतना वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन नहीं है विद इन द डिपार्टमेंटल और ऑर्गेनाइजेशनल फंक्शन, देन आपकी लेवल ऑफ जॉब इन्वॉल्वमेंट इज लाइकली टू बी रिड्यूस्ड. तो जितनी ज्यादा जॉब इन्वॉल्वमेंट होगी, एम्प्लॉइज यूज्ड टू रिमेन सेटिस्फाइड. Psychological empowerment is that how you are at liberty to do something within your work environment. Belief in the degree of influence over a job, competence, job meaningfulness, and an autonomy. If you are being given an authority, empowerment to amend your standard operating procedure or propose something good for the organization, departmental functions, and your suggestions and contribution in being valued by the supervisors and the organization, so naturally your psychological empowerment will be high. If you are not being properly heard, your values, your suggestion is not being valued by the organization, your psychological empowerment is likely to be reduced, जिसकी वजह से आप disengage हो सकते हैं from the organization or from your department. So all these factors, job satisfaction, job involvement, and psychological empowerment combinedly develops a job attitude. And job attitude, that is something, a combination of your organizational citizenship behavior and your job performance. If you are a person with a positive job attitude, your performance and your organizational citizenship will be higher. If you are a person with a negative job attitude, these both things like organizational citizenship behavior and your job performance is likely to be affected from those elements. All right, moving to further, let us understand about the organizational commitment. Commitment is a kind of a state of your commitment or a relationship with your department or an organization, with a person or an objective. Normally it is being said कि मतलब आप जॉब के साथ जॉब कमिटमेंट बड़ी इंपॉर्टेंट है. किसी जॉब को परफॉर्म करने के लिए जॉब कमिटमेंट रिफ्लेक्ट कर रही होती है कि हाउ मच यू आर इन्वॉल्व और सेटिस्फाइड. बिकॉज इफ एम्प्लॉय हु इज नॉट सेटिस्फाइड विद द जॉब, डेफिनेटली उसकी जॉब कमिटमेंट कभी भी नहीं आ सकती है. दैट्स वेरी क्लियर. ऑलराइट, so that is very important to understand. This is a kind of identification of a particular organization or a department,
and you wish to continue with that particular department or a supervisor or a organization, ठीक है। उसके अंदर क्या क्या 3 चीजें होती हैं, effective, continuous commitment and normative, alright। अगर कोई भी ऐसी जॉब होगी जिसमें आपके लाइक एथिकल और मॉरल वैल्यूज अगर कन्फ्लिक्ट करेंगे, you will likely have a no job commitment, alright। जहां पे आपकी वर्थ होगी, साइकोलॉजिकल एम्पावरमेंट होगी, योर सजेशन इज बीइंग वैल्यूड, तो नेचुरली आपका पॉजिटिव एटीट्यूड होगा और आपकी जॉब कमिटमेंट बढ़ेगी, ऑलराइट। अगर आप कहीं पे समझते हैं कि आप जिस इदारे में काम करते हैं या जिस सुपरवाइजर के नीचे आप काम करते हैं, दे आर वेरी मच पॉजिटिव एट यू एंड आपकी रिस्पेक्ट होती है, वहां पे आपके इमोशनल और रिलीजियस सेंटिमेंट्स का ख्याल किया जाता है, यू आर बीइंग टेकिंग यू आर बीइंग very well taken care of by that particular supervisor or organization, तो आपका जो है organizational commitment level बढ़ जाएगा, you will definitely would love to work within that organization। आपने example देखा होगा, there are many multinational firms, people are tend to work, and you know they are very eager to work in the multinational firm because of their kind of environment they are giving to their employees, like maybe हेल्थ एंड सेफ्टी एनवायरनमेंट हो गया, एम्प्लॉयज वेलफेयर की एक्टिविटीज हो गई। तो बिकॉज ऑफ ऑल दीज एक्टिविटीज उसके अंदर जो है बेसिकली एम्प्लॉयज के अंदर एक रिकग्निशन या रियलाइजेशन आती है कि देयर ऑर्गेनाइजेशन आर रियली केयरिंग देम। तो बिकॉज ऑफ दैट पर्टिकुलर एटीट्यूड और बिहेवियर और ऑर्गेनाइजेशन और मैनेजमेंट टुवर्ड्स देयर एम्प्लॉयज, इट ऑलवेज ड्राइव और इग्नाइट और ब्रिंग द जॉब कमिटमेंट ऑफ द एम्प्लॉयज। आपने मल्टीनेशनल फर्म में देखा होगा कि यूनिलीवर है, प्रॉक्टर एंड गैम्बल है, दीज आर द काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस जहां पे बहुत कम टर्नओवर है, जिसकी वजह से वहां पे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज कम आ जाती है, क्योंकि वहां पे जितने भी लोग काम कर रहे हैं दे आर वेरी मच सेटिस्फाइड विद देयर पोजीशंस, देयर सुपरवाइजर, देयर एनवायरनमेंट दे हैव, तो उनकी लेवल ऑफ जॉब कमिटमेंट जो है बहुत ज्यादा है, ऑलराइट जी। और जब आपकी जॉब कमिटमेंट होगी, जॉब इन्वॉल्वमेंट होगी और जॉब सेटिस्फेक्शन होगी, तो उसकी वजह से आपकी कमिटमेंट बढ़ेगी और कमिटमेंट की वजह से आपकी परफॉर्मेंस नेचुरली ग्रो करेगी, ठीक है जी। अब कौन से और फैक्टर्स हैं जो पॉजिटिव जॉब एटीट्यूड में कंट्रीब्यूट करते हैं? परसीव्ड ऑर्गेनाइजेशनल सपोर्ट मींस, जिस तरह अभी मैंने कहा कि आपको एक दिस इज अ काइंड ऑफ अ परसेप्शन इन योर माइंड और अ फीलिंग अबाउट योर ऑर्गेनाइजेशन दैट हाउ ऑर्गेनाइजेशन इज एक्चुअली लुकिंग taking care of your needs. It may be your financial need, it may be your emotional support, it may be your family requirements, maybe your children education, all right, maybe health and safety issues, all right, जिसमें बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपने नोटिस किया होगा मुख्तलिफ जो लाइक स्कीम्स आती हैं, लाइक उसके अंदर हेल्थ इंश्योरेंस हो गई, आपकी ओपीडी हो गई, आपके बोनसेस हो गए, आपका इंटरनेशनल टूर्स हो गए, विजिट्स हो गए, ट्रेनिंग्स हो गए, दीज आर ऑल थिंग्स आर like measures which are being taken by the organization to let the employees feel connected with the organization। उनको एहसास होना चाहिए कि एम्प्लॉयज उनके लिए कितना केयर करती है, जिसमें लोन एडवांसमेंट है, सैलरी एडवांसमेंट है, I mean many things which are being done by the organization to just give a message to their employees that their organization is really taking care of them. They are valuable employees of the organization. They are being valued in the organization by adopting or taking this kind of a measures. Employees engagement बड़ा important factor होता है। I mean when this is a human tendency, when you do the routine work, tends to become victim of a boredom, all right। ये बड़ा important है कि एम्प्लॉयज को जो है मुख्तलिफ वैरायटी ऑफ टास्क देना चाहिए, उनकी इंगेजमेंट को इंश्योर करना चाहिए, कुछ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, कैपेसिटी बिल्डिंग स्किल्स ट्रेनिंग होनी चाहिए, ताकि उनकी जो है एंगेजमेंट टुवर्ड्स जॉब होनी चाहिए विद रिस्पेक्ट टू देयर मेन फंक्शंस। और इदारे बहुत सारे जो हैं वो ऑन द जॉब ट्रेनिंग भी अरेंज करते हैं या फिर ऑन द साइड ट्रेनिंग भी अरेंज कर रहे होते हैं, मुख्तलिफ ट्रेनिंग टूर्स बेस्ड प्लान करते हैं, जस्ट टू प्रोवाइड देम एन अपॉर्चुनिटी टू हैव सम एंगेजमेंट रिलेटेड टू देयर जॉब, ताकि उनमें थोड़ी सी सेटिस्फेक्शन आए, थोड़ा सा लोकेशन हो जाए, थोड़ा सा एनवायरनमेंट चेंज हो जाए, जिसमें वो फिर अपनी एनर्जी को रीगेन करके विद ऑल देयर कमिटमेंट एंड देयर 100% दे मे कम अप टू द जॉब एंड add a value to their existing functions. That is known as employee engagement. Now these are the question arises, are these job attitude really distinct? ठीक है, answer is no, these attitude are highly related, alright। जिस तरह हमने कहा कि जो मुख्तलिफ जो एटीट्यूड है वो रिलेटेड है, जिसमें हमने कॉग्निटिव की बात की, अफेक्ट की बात की, देन हमने बात की बिहेवियर की, alright। they combinedly actually develop attitude and variable में redundant measuring the same thing under a different name, all right। आप कभी
ओवरलैपिंग चीजें हो जाती हैं। कभी आप जो कॉग्निशन साइड, जिस तरह आपने पिक्चर के अंदर ये डिस्कस भी किया था, व्हेन यू हैव सम evaluation of your supervisor, आप डायरेक्टली एक्शन में भी चले जाते हो। तो आई मीन some one or other way it is something overlapping, or it's the same thing, and it is being done by the employees, sometime consciously and sometime unconsciously. All right, and while there is some distinction, there is also a lot of overlap. ठीक है, वो प्रिंसिपली तो जिसको हम एटीट्यूड कहते हैं, तो समटाइम इट इज अ काइंड ऑफ योर कॉग्निटिव स्टेट, इट मे बी योर अफेक्टिव स्टेट, इट मे बी योर बिहेवियरल स्टेट। तो ये समटाइम ये दे आर इंटरचेंजेबल एंड समटाइम दे ओवरलैप ऑन इट, और कहीं पे वो चीजें बिल्कुल डिस्टिंक्ट हो जाती है, जहां पे हम कॉग्निटिव डिसोनेंस की हम बात कर चुके हैं। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। जॉब satisfaction क्या है? जॉब satisfaction, one of the primary job attitude measure, all right, broad term involving in a complex individual summation or a number of discrete job elements, all right, जो हमने अभी पिछली स्लाइड में डिस्कस किया कि जॉब सेटिस्फेक्शन के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं, जिसमें हमने सैलरी की बात की, सुपरवाइजर के एटीट्यूड की बात की, वर्क एनवायरनमेंट की बात की, हेल्थ एंड सेफ्टी इश्यूज की बात की, योर ओवरऑल नीड्स की बात की, नीड सेटिस्फेक्शन की बात की, कि आपको प्राइमरी टूल्स एंड टेक्निक्स, प्रोसीजर्स सब डिफाइंड है, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट है, कैपेसिटी बिल्डिंग के कुछ मेजर्स हैं वहां पे। तो ये सारी चीजें जो है मुख्तलिफ एलिमेंट्स है जो आपके सोर्स ऑफ जॉब सेटिस्फेक्शन बनते हैं। अब इसको मेजर किस तरह कर सकते हैं कि लाइक आप उसको सर्वे करवा सकते हैं, क्वेश्चन आंसर, मतलब जिसमें हम एम्प्लॉय सर्वे भी करवाते हैं, हम 1-to-1 इंटरव्यू भी करते हैं, और जिसको हम एम्प्लॉयमेंट सर्वे करते हैं, जिसमें हम मुख्तलिफ जो इदारे के अंदर फैसिलिटीज दी जाती हैं, जिसमें हेल्थ फैसिलिटी है, आपकी कैंटीन फैसिलिटी है, आपकी ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी है, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट है, कैपेसिटी बिल्डिंग एक्टिविटीज हैं, ठीक है, एम्प्लॉय एंगेजमेंट एक्टिविटीज, इधर मल्टीपल एक्टिविटीज, ऑलराइट जी। और फिर अगेन आपके बोनसेस हैं, आपके इंक्रीमेंट्स हैं, आपके ओवरऑल जो है सैलरी बैंड्स हैं, उनके बारे में मुख्तलिफ सर्वे किए जाते हैं, ताकि उससे अंदाजा लगाया जा सके कि एम्प्लॉयज जो हैं जनरली क्या फील करते हैं। तो उसके लिए क्वेश्चन डिजाइन होता है जो डिस्ट्रीब्यूट होता है, उसके अंदर आप यू मे हैव मल्टीपल फीडबैक फ्रॉम द डिफरेंट एम्प्लॉयज, ऑलराइट। या फिर आप उसके इंटरव्यूज भी कर सकते हैं, सैंपल रैंडम इंटरव्यूज आप कर सकते हैं। से फॉर इंस्टेंस if you are like taking couple of people, like around 40 to 50 people from the total employment strength of around 1000 or more, आप उससे थोड़ा सा एक जनरल टेंडेंसी निकाल सकते हैं, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट से लोग निकाल के आप उनसे इंटरव्यू कर सकते हैं, तो हैव अ पल्स कि आप जो है जनरल टेंडेंसी ऑफ जनरल फीलिंग ऑफ एन एम्प्लॉयज टुवर्ड्स ऑर्गेनाइजेशनल different arrangements regarding the employees well-being, वो उससे वो मुतमईन है या नहीं है, तो आपको वो वहां से पल्स या फीडबैक मिल सकता है। Are people satisfied in their jobs? यूनाइटेड स्टेट्स की यहाँ पे रिसर्च है, मैं यहाँ पे पाकिस्तान के हवाले से थोड़ा आपसे एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। यहाँ पे 3 तरह की ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही होती हैं, लाइक वी आर टॉकिंग अबाउट लाइक सोल प्रोप्राइटरशिप, जो नॉर्मली एक ओनर होते हैं और उसके नीचे जो है उनके लाइक मुख्तलिफ स्टाफ काम कर रहा होता है, जिसको हम सेठिया स्टाइल कंपनीज भी कहते हैं, जिसके सेठ होते हैं, मालिक होते हैं, मालिक। और फिर उसके साथ कुछ हमारी जो ऐसी है नेशनल कंपनीज होती हैं, ठीक है जी, वो बाज़-औक़ात सेठ की भी होती हैं, क्योंकि वो तो लोकल कहलाती हैं, लेकिन जो हमारी सेठिया जो नेशनल कंपनीज होती हैं, दे हैव अ कॉर्पोरेट कल्चर, और सेठिया कंपनी में कॉर्पोरेट कल्चर नहीं होता है। जो नेशनल लेवल की कंपनीज होती हैं उसमें कॉर्पोरेट कल्चर होता है, कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो इन्फ्लुएंस होती हैं फ्रॉम द मल्टीनेशनल कंपनीज, और तीसरी कैटेगरी है हमारे पास मल्टीनेशनल कंपनीज की। तो लिहाजा अगर हम यहाँ पे मैं अपनी सोसाइटी की बात करूं, तो यहाँ की सोसाइटी में नॉर्मली जो है प्रेफरेंस टुवर्ड्स जॉब, प्रेफरेंस टुवर्ड्स मल्टीनेशनल कंपनी इज हाई। मतलब अक्सर लोग जो हैं मल्टीनेशनल फर्म के साथ काम करना पसंद करते हैं, क्योंकि उनको इस बात का एहसास है कि मल्टीनेशनल फर्म हमारी सोसाइटी में बहुत अच्छे तरीके से काम करें, दे हैव वेरी गुड प्लान्स फॉर द एम्प्लॉयज, दे रियली टेक केयर ऑफ दोज देयर एम्प्लॉयज। लेकिन यहाँ पे बहुत सारी नेशनल कंपनीज भी हैं जो बड़ी जायंट्स हैं, और वो अकॉर्डिंगली इन्फ्लुएंस्ड हैं फ्रॉम द डिफरेंट मल्टीनेशनल कंपनीज, और वो भी कोशिश करते हैं किसी तरीके से उनको चेज करें और उन्हीं की तरह की पॉलिसीज वो अडॉप्ट करते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, हमारी सोसाइटी के अंदर जो मेजर कंट्रीब्यूशन इंडस्ट्री के अंदर है वो है सेठिया स्टाइल का, लाइक काइंड ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन दैट इज बीइंग owned by some single person or a sole person or a single person. तो लिहाजा जो employment, the huge chunk of employment is actually being created by the सेठिया कंपनी। तो लिहाजा हमारी सोसाइटी को देखते हुए जो लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन है वो ज्यादा ड्रास्टिकली कम है एज कम्पेयर टू द यूनाइटेड स्टेट्स। वहां पे गवर्नेंस या कॉर्पोरेट गवर्नेंस या कॉर्पोरेट कल्चर नाम की कोई चीज नहीं होती है।
So let's have a look just to clarify your idea about the, the people who are living in the United States, how they feel about their job satisfaction. All right. अब जिस तरह जॉब सेटिस्फेक्शन एंड डिससेटिस्फेक्शन के जो पॉसिबल काजेस क्या हो सकते हैं या पे एलिमेंट्स हैं पे, अगर पे आपकी ऐसी है जिसमें आपकी, क्योंकि हमारे यहाँ 17,500 इज अ मिनिमम वेजेस पे व्हिच इज वेरी मच लो, ऑलराइट. तो नेचुरली इट इज अ मेजर रीजन फॉर अ job dissatisfaction among the employees because this is the minimum wages, all right, for the labor set by the government. So, and which is very, very irrational as compared to the inflation rate or the consumer price index in our country. All right, ji. Personality can influence job satisfaction. Of course, your personality, if you are extrovert and you are a kind of a person who love to communicate, who love to mingle up with the people, love to interact with the people, love to visit, you must select your career path accordingly. For example, if you kind of a person, as I said, you are a kind of a person who is a people's person, love to meet the people of various nations, various geography, you should be probably thinking about the like a marketing career or a sales career. All right, I mean जिसके अंदर आपकी public relations could be the possible career option for you because it is a kind of a job that gives you an option according to your interest. That is more important to assess your own personality because your personality does affect on your job performance or job satisfaction and dissatisfaction. If you are introvert and you are being if you are looking at career options or a career path in the sales department, being introvert, you should not. Introvert के लिए you can be a part of a finance department, you can be part of a like HR department because these are the people who are used to remain very silent. They have a very reserved socialization. So not exactly I would say HR is a general HR operation, but it would be like a kind of a compensation management specialist like that. So I mean, you need to assess your personality, whether you are a kind of a person who are fit with the position or a job requirement or not. That is very important because it will lead your job satisfaction or a dissatisfaction. All right. So these are the main causes on the job stress. Sometimes it happens, like as I said, in our society, this is a majority of our, job. Majority of our employment is created by the, Setia style company or the, companies that are being owned by a single owner. All right, having no corporate culture or a governance. All right, and because they usually set kind of their work style in a way that because they used to get huge work from a single employee. I mean their distribution of work or division of labor is not proper, not appropriate. All right. So what happens, the employees who are working in the small companies or a city style company, they are being overloaded with the work. All right, even so much so their employees are so much victimized of those workload, and they actually are being forced to compromise their family time, their leisure time, their relaxed time. They are being called upon an overtime activity, they are being called on holidays. All right, this is in our society which is happening right now, and this is a big reason of the job stress. All right, that is so much stressful. I mean there is a huge pressure being given to the employees for the target achievement, including sales, and that creates a lot of job stress, work stress. And these are the different work stressor. Even sometimes, as I said, if you are having a kind of a supervisor who is very much tough and who is a kind of a person who is not positive at you, so definitely it will be a great source of your job stress. All right, then pay is again, if you are having a pay that actually satisfies or compatible enough to comfortable enough to satisfy your needs, you will be definitely satisfied with the pay. But if your needs are not satisfied with the existing pay, definitely it will create a stress in the job and you will be dissatisfied. Promotion, if you are working in an organization for a long period, more than, let's say for instance 10 years, 8 years, and you are not being promoted at all within your organizations, definitely will demotivate you and you will become a dissatisfied. Work, if it is work is a complex and risky, threatening to your life, and there's no SOP, no actually tools and technique which are standardized and may harm your health and may endanger your life, will definitely demotivate you and dissatisfy you with your existing job. Security,
If you are working in an environment or an organization that is located far from your home, and it might have some security threats in the route, so naturally safety is first. Whether safety security may it be within the organization or outside the organization, because you have to reach out to the organization, and you are being having a kind of an environment where you never know कि आपके रास्ते में चलते हुए कोई हादसा हो जाए, कोई रॉबरी हो जाए, कोई खुदा ना खास्ता फायरिंग हो जाए, शूटिंग हो जाए, बॉम्बिंग हो जाए, whatever the case may be, naturally you will be at risk to go your organization, and it will be a kind of a situation where you will feel demotivated and dissatisfied with your job. All right, ये इस तरह के केसेस अक्सर आपने देखे होंगे कराची के अंदर, जब इस तरह की खुदा ना खासा सिचुएशन डेवलप हो जाती है, जहाँ पे जलाओ घराव शुरू हो जाता है, पीपल थ्रेटनिंग, पीपल कम आउट ऑन द रोड एंड क्रिएट वायलेंस एंड ऑल, यू नो, ना सिर्फ कराची दीगर इलाकों में भी आप देख सकते हैं, और दीगर ममालिक में भी आप देख सकते हैं, जब इस तरह की सिचुएशन हो जाती है तो उसके अंदर बड़ा मुश्किल हो जाता है आपको सर्वाइव करना। ऑलराइट जी, अभी कोरोना वायरस के अंदर बड़ा मसला हो गया था कि लाइक अभी रिसेंटली इट वाज एन एग्जांपल काइंड ऑफ एन इंस्ट्रक्शन व्हिच वाज, I mean, it was a kind of influence created by the, you know, Karachi Chamber of Commerce, मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज को और एम्प्लॉय फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान मिल के इन्फ्लुएंस कर रहे थे सिंध गवर्नमेंट को कि आप जो है इजाज़त दें कोरोना वायरस के दौरान कुछ मखसूस इंडस्ट्रीज को खोलने की इजाज़त दें ताकि वो काम कर सके। और कॉन्सिक्वेंटली हो क्या रहा था कि बहुत सारे लोग जो हैं वो अवर्सिव थे, दे वर रिलक्टेंट टू कम टू द ऑफिस, बिकॉज जो काउंटर मेजर्स, जो सेफ्टी मेजर्स सजेस्ट किए गए थे मुख्तलिफ government agencies की तरफ से to protect employees from the infection of the coronavirus were not adopted properly by the industry and many organizations, especially small organizations, and that was a big reason they were not feeling secure with respect to their health and safety, so they were reluctant to come to the job, जिसकी वजह से फिर वो naturally हमारे यहाँ इंडस्ट्री में अप्रोच ही होती है, दे विल एक्चुअली फोर्स यू टू कम जॉब। तो उसमें बड़े रिलेक्टेंट थे, डिमोटिवेट थे, मजबूरन उनको जॉब इनसिक्योर करने के लिए आना पड़ रहा था। बहुत सारे लोगों ने अपनी जॉब लूज की हैं, दे वर टर्मिनेटेड और फायर्ड और सेक्ड फ्रॉम देयर पोजीशंस। सो दिस इज द काइंड ऑफ अ सिचुएशन happens when you are in a fix, in a situation where your own self, your own existence is at threat, so you cannot be satisfied with that situation. Then supervisor, if supervisor is a negative, of course you will be dissatisfied. Co-workers, if your colleagues are not cooperative, they do not support you in your work, and they do not comfortable with you, and you are not comfortable with them, and they keep on taunting you, keep on criticizing you, keep on ignoring you, keep on isolating you. So this is a kind of a situation where nobody will feel comfortable while at his job, at his or her job. All right, these are a different job elements or causes, main causes of a dissatisfaction of any employee in his organizations. So these are a varied percentage, which definitely is a United States poll, and if you talk about the Pakistan, it will be a kind of a very horrific, and it will be a double. This is I predict. All right. Now, employees' response to dissatisfactions. I mean, when people decides to respond, there are two different categories. In fact, four categories. Two different categories in a way, like they may be the constructive response, maybe the destructive response. These are the two main categories, and four kind of responses are expected in the two different categories. If you are active, active in response, you are active kind of employee that you will love to respond. And if you work in a negative side, you are extremely negative in your behavior and you are destructive, then you will likely to leave your organization with immediate effect. There are many cases in the organization who are not satisfied with their situations. They come and leave with the organization without taking care of anything, without considering anything, whether they are in a bond or they are anything. They are a kind of a people who are very active, very vocal, very reflexive in their behavior. They do not bother any restrictions or a binding imposed by the company, may it be the notice period or what. They leave the organization with immediate effect, and they with a kind of a very negative kind of a reflexive attitude. All right. And if you are active employee, all right, and if you are a passive employee and a destructive,
normally what do these kind of employees do? They always allow things to happen. They do not bother to even complain someone. They do not bother to stop someone. They do not bother to recommend anything to, because I mean they are kind of employees who keep on silent. They kept on silence. All right, because they do not bother at all. They are not concerned. They are totally disengaged employees. They do not feel so pain about the organization or department, whether something wrong happening within the department or an organization. They are least likely to highlight it. Agar something is like लाइक से फॉर इंस्टेंस अगर कोई इस तरीके से अनएथिकल कोई चीज हो रही है, कोई विद इन द कंपनी प्रीमियम में कोई शराब पी रहा है, कोई नशा समथिंग नार्कोटिक्स आई मीन समथिंग ड्रग्स यूज कर रहा है, कोई वहां पे कोई अनएथिकल एक्टिविटी हो रही है, या वहां पे कोई सेक्सुअल हरासमेंट का केस हो रहा है, तो इस तरह के जो एम्प्लॉयज होते हैं जो बिल्कुल डिसंगेज होते हैं, जिनका कोई लाइक दे डू नॉट फील एनी रिलेशंस विद द ऑर्गेनाइजेशन, तो वो किसी भी कंडीशन को हाईलाइट नहीं करते हैं, वो उस चीज को होने देते हैं. वो कहते हैं कि since we are disengaged, they are destructive and very passive. They are also destructive because they are not putting their value, or some they do not make any effort to make things improve, but rather they keep on selling and let things happen in a negative way. So they are very dangerous. All right, and now if you are constructive and active, you are a vocal, you can express yourself, and you have a good influence, as I said, if you have a good networking within the organization. So always, if you are active, and you will definitely try to approach to the right person for the improvement of the conditions. If something is happening, you will be a vocal, you will straightforward go to the your networks. It may be your senior supervisor, maybe the departmental heads, maybe the MD even. They are the active and constructive people who always come up with a very positive solution and suggestion that may be valuable and positive, maybe very kind of a maybe very good for the department and the organization. And if you are passive and constructive, then these are the people who actually just wait for the right time and the right situation, and they are loyal. They do not leave the organization, but they are waiting for right situation. May their boss be changed, or may the MD may be changed, may the MD himself or a boss may himself realize and come to them for any suggestion, for inquiring any suggestion or value addition or corrections. So these are the employees who actually are loyal to the organization, but they are time gainer. They used to gain the time and wait for a right time and situation to put forward their valuable suggestions or recommendation for the overall improvement of the organizational work. All right. So outcomes of a job satisfaction: if you are satisfied, your job performance will be high. All right, because you will be involved, you will work with your all determination and conviction to make things happen. All right, if you're satisfied with your job conditions, maybe the salary or whatever the case, environment, your supervisor, you will be more satisfied. Your job performance will be high, and your organizational citizenship behavior will also be high, because you will feel pain if something is going wrong within the organization, and you will always try to highlight that position, that particular situation that is harmful to your organization. You will not allow things happen negatively. You will try to communicate to your senior supervisor, or if you are capable enough, if you are being authorized to stop that negativity within the organization, you can, if you are so empowered. All right. Customer satisfaction: employees are the first customer, immediate customers of the organizations. Employees are satisfied, naturally they will put forward all the efforts, time and energy and value addition into the product that will eventually become a source of customer satisfaction. All right. Absenteeism: if you love your job, definitely your absenteeism will be less. All right, you will love to come on the job, you will love to come on the workstations and work with your all determination and conviction to make things improve and to add on some valuable to the organizational work efficiency. All right, now this is the end of the chapter, attitude and the job satisfaction. Thank you very much for the listening. See you soon in the next of our lecture. Thank you so much.